और हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़े, इतिहास को जाने और इतिहास को जीने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास है मित्रों। कोई समाज अपने इतिहास को भूल करके, अपने इतिहास के ग्रासरूट से अगर बिखर जाता है तो जैसे मूल से उखड़ा हुआ पेड़ कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो सूख जाता है, वैसे ही समाज जीवन की धारा सूख जाती है। इतिहास से उसको ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, रास्ते खोजने को मिलते हैं। और हमारे देश के लिए अगर सबसे बड़ी एक समाज की मन में एक आवश्यकता है तो हमारी सोसाइटी हिस्ट्री कॉन्शियस होनी चाहिए। इतिहास को भुला देने वाली समाज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने श्री राम बोला है क्योंकि आपका नाम ही श्री राम है, तो राजू मल्होत्रा। तो हमारे पास श्री राम सामने हैं, उनके पास सारे आयुध हैं, बस हमें ट्रेन होना है उनके अंडर। मेरा सवाल यह है कि आजकल के टेक्स्ट बुक्स जो हैं उसमें जो भी बच्चों को हिस्ट्री बताई जाती है उससे ऐसा लगता ही नहीं कि आई एम प्राउड अबाउट माई इंडिया। तो टेक्स्ट बुक को रिफ्रेम करना कितना जरूरी है? हाउ टू रीराइट हिस्ट्री टेक्स्ट अगेन, एनसीईआरटी, HRD role. I have written, my foundation wrote 10 volumes on the history of Indian science and technology. Nobody has ever done more than 1 or 2. We wrote 10. We never got support. We did it with our own money until we ran out. Otherwise, we would have many more. All done by brilliant scholars, technologists, top-notch scientists, archaeologists. No chauvinists, nothing that would be considered exaggeration or anything, or saffron. Very solid science, but we didn't get any support. Murli Manohar Joshi was very excited and asked me to send proposal after proposal when he was a HRD guy, but we never heard back. And then this new fellow Kapil Sibal also was very excited. One time called me for a meeting. Again we gave him a sample, and then I don't know what they're expecting. Are we supposed to give them bribe? हमको तो ऐसा आता नहीं काम. Or are we supposed to? What are we supposed to do to really turn their word into action? Because verbally वो कहते हैं हाँ करेंगे, बहुत great काम किया, but how to really turn it into action? They could help us in so many ways, and we're not looking for any money. We just want them to take this knowledge, do something useful with it. Again, there is a new HRD. I don't know what I can do to get interest. So the knowledge of history has to be rewritten, but the history is not just about किस king ने क्या किया, what the kings, which kings fought and who won. It's not about military wars. History is also history of science. History also is history of exports of Indian ideas to the rest of the world. So history of Indian history is also a lot of other things than what we normally consider to be history. And this requires a lot of people under proper direction. I haven't seen such a thing set up. So I'm sorry, but I had expected that something would happen by now. Yeah. क्या देता है? भारम न बाधति राजन यथा बाधति बाधते। कि राजा मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुंह से बोला हुआ बाधति शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधति शब्द